to go. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से इस लाइव स्ट्रीम पर. द चैनल इज कॉल्ड आर यू हियर फॉर द क्रिकेट, brought to you by Dafa News. Once again, it's me, Jamie Alter, here to talk about India. Looking forward to the World Cup final tomorrow, but as well as the past 6 weeks through which this Indian team has made the final with an unbeaten 10-0 record. I was at the Wankhede Stadium for the first semi-final where India beat New Zealand. It was a tough competitive match. बहुत लोग मानेंगे कि काफी समय तक इंडिया को लगा न्यूजीलैंड को आउट करने में. And then I hopped over the very next morning at 3 o'clock in the morning. I went to Eden Gardens, covered the second semi-final, another pulsating knockout match between South Africa and Australia. Australia won that tense match. They were also really stretched almost to the limit. और अब दोस्तों कल अहमदाबाद के स्टेडियम में मुकाबला होगा जो मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट टीम्स, सबसे कंसिस्टेंट टीम्स और सबसे डिजर्विंग टीम्स कल के फाइनल में मौजूद होंगे. We'll come to that. I'll do another show tomorrow before the match. I want to talk about one man who, to me, has stood above everyone else. Rohit Sharma. Virat Kohli के पास 700 runs hai, something like that. Insane amount. He's broken the number of runs in one single edition by Sachin Tendulkar, 673 odd. He's gone past Sachin Tendulkar's one-time mythical landmark of 49 ODI centuries, 50 ODI centuries. Just let that sink in. That is the genius of the greatest batsman of this era, and I think the greatest chaser of all time, Virat Kohli. I was so fortunate to be there at the Wankhede when Virat Kohli got that 50th one-day 100. Virat Kohli has done things which I think most of us would expect him to do. Mohammad Shami, talk about the unexpected. Mohammad Shami, दोस्तों, लीडिंग विकेट टेकर है इस वर्ल्ड कप के, और अभी भी ताज्जुब की बात है, हैरानी की बात है बल्कि, कि 4 मैच तक मोहम्मद शामी को ड्रिंक्स कैरी करना पड़ा. It took, and understand the importance of what I'm saying here, दोस्तों. It took Hardik Pandya's injury for India to play Mohammad Shami. What has he done in 6 matches? 23 wickets, 3 5 wicket hauls. He's gone past Zahir Khan and Javagal Srinath's mark for the most wickets by an Indian at a World Cup. Then when he got his 50th one-day World Cup wicket, again, I was at the match, he got 7 for 57, which stand as the best figures by an Indian bowler in all World Cups. It has been, from a bowling aspect, Mohammad Shami's World Cup. But for me, very quickly, रोहित शर्मा का जो योगदान है इस टीम पर, इसी चैनल पर दोस्तों, बहुत बहुत बार मैं क्रिटिकल था रोहित की कप्तानी को लेकर, रोहित की बैटिंग को लेकर पिछले 12 महीने में. बट व्हाट रोहित शर्मा डिड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दैट एशिया कप इज he started to walk the talk. He started to put down a benchmark for scoring in the power plays. आप इंडिया के stats देखिए इस वर्ल्ड कप के लिए. No better team than India in the batting power play. They're averaging over 100 runs in the first 10 overs. और इसका श्रेय almost entirely goes to Rohit Sharma. And when you think that on October 8th against Australia, Rohit Sharma started his campaign with a duck. A duck. That means in 9 innings since, he's only failed once again against Sri Lanka when he got 4. In 9 innings, he's got 550 runs and an average of 55, but more than the hundreds, more than the 50s, more than the chances Rohit Sharma had to get hundreds. It is the selfless nature with which he's applied himself. It is acceptance. It is realization कि बहुत समय तक इंडिया थोड़ा आउटडेटेड वनडे बैटिंग कर रही थी, और अगर इस वर्ल्ड कप में इंडिया 10-0 है तो इसका बहुत बहुत श्रेय जाता है रोहित शर्मा को. He has walked the talk, and when I say walk the talk, I mean he's gone out and he's batted aggressively. Look at the England match, look at the New Zealand match, look at the semi-final, look at the Netherlands match, look at the Pakistan match. He has on almost every occasion. That 131 against Afghanistan, which kick-started Rohit Sharma's golden run. Virat Kohli has got more runs. Shreyas Iyer has dazzled. KL Rahul has dazzled. Shubman Gill has got 350 runs. But मेरे हिसाब से रोहित शर्मा के 550 रन एक तरफ, जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं, it's given a cushion to Virat Kohli to play the anchor role. It's given a cushion to Shreyas Iyer and KL Rahul in the middle order. It's given a cushion to Shubman Gill. Rohit finally realizing what is required in these conditions, and that is to score the maximum runs you can in the first 10 overs. He failed in one match, he got a duck. He failed against Sri Lanka, he got 4. उसके आजू बाजू आप इनके इनिंग्स देखिए, चाहे 47 हो या 44 हो या 61 हो या 100 हो, 2 बार रोहित शर्मा against Pakistan and against England, he had a chance to slow down and push for 100. He didn't. He got out for 84, 85 against Pakistan when the target was just 191, 192. Whatever the threat was from Pakistan's new ball bowlers, Rohit Sharma almost single-handedly erased that. And then against England, जहां टीम फंस चुकी थी, जब विराट कोहली नहीं चले, जब शुभमन नहीं चले, जब श्रेयस अय्यर ठीक ठाक फॉर्म में थे पर वो नहीं चले, रोहित शर्मा took the attack to
England on that very, very tough Lucknow track. And one set, he didn't slow down. He took on Adil Rashid when he was on 87 because he thought the ball was there to be hit. And on that tough track, his 87 proved match winning. So कहने का मतलब है many other players have got the headlines, the Kohlis, the Shamis, the Shreyas Iyers. Rohit Sharma, to my mind, has been that glue which around the team is stuck and doing fantastic things. उनका जो एक एक्सपीरियंस रहा, इनका जो फॉर्म रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनका अवेयरनेस कि भाई मैं कप्तान हूं, ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, इस वर्ल्ड कप में मुझे कुछ हटके करना पड़ेगा जो अब तक मैं नहीं कर पाया. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द मैन हुज गॉट 3 one-day double centuries, but he changed his template in the last few months. It started in the Asia Cup in all earnesty, and now it's just an extension of that we're seeing in this World Cup. I don't know whether Rohit Sharma will be player of the tournament, but definitely for me, he's not got the kind of runs that Virat Kohli has. But if there were a batting player of the tournament, irrespective of whether Rohit Sharma gets his hands on the World Cup trophy tomorrow night in Ahmedabad, for me, if someone were to pick a batting player of the tournament for every single reason I've underlined and much more, mere hisab se, it would be Rohit Sharma. Chal. I've got my intro out of the way. I'll come back to Rohit Sharma. I'll take your questions also. I'm just so impressed by what Rohit has done. Devang is saying, good morning, afternoon, evening, everyone. Good afternoon to you, my friend. Good to see you back. Ranan Jay Yadav saying, don't you think that Rohit is playing fearlessly because he knows there's batsmen like Virat Kohli who will anchor the innings? But sahi hai, but Virat Kohli's been an anchor for many years. It's taken Rohit Sharma, India's abject failure at last year's T20 World Cup, और दिनेश कार्तिक ने भी इस बात का जिक्र किया commentary पे. He said, I was there. I saw Rohit wanted to make a statement. पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में जो इंडिया बाहर हुई when they had the worst power play team score of all the teams, रोहित शर्मा को एहसास होगा कि नहीं अभी हमें चलाना पड़ेगा और मेरे पास वो एक्सपीरियंस है मेरे पास वो सीनियोरिटी है. That's why I understand that Virat Kohli's got a very specific role, and that's to anchor the innings, and he's doing it brilliantly. He's got the most runs. But this attacking approach, this is very new to Rohit Sharma. आप देखिए पिछले 10 साल से उनका जो टेम्पलेट था, पहले 10 ओवर में 40 50 टीम का स्कोर, फिर जब वो सेट है वो 100 के बाद वो चलते हैं. इस बार रोहित शर्मा 100 तक इंतजार नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि जल्दी से. ही इज गेटिंग 40 ऑफ 20 balls, 50 ऑफ 30 balls. दिस इज अ वेरी न्यू रोहित शर्मा एंड अ वेरी डेंजरस रोहित शर्मा. सागर कह रहे हैं ओल्ड स्कार्स आर सो डीप that can't even calmly feel that we are a clear upper hand tomorrow. It does feel strange, but मेरी बात मानिए, India has the upper hand. Shubham, happy Saturday, Jay bhai. Aapko bhi. Just wanted to let you know how much I've enjoyed these streams for the past 1.5 months. Thank you, my friend. Thank you for joining me, Shubham. No matter the outcome tomorrow, this has been a truly memorable tournament. It has, hasn't it? I agree with you. It has. Ashutosh, I get love for Shami, but not some people hate for Shardul. Shardul doesn't need any hate. He's done his job just fine. Exactly, Ashutosh. He's done everything he asked for. He's a team player. India had that approach because how bowlers save Oz with bat. Has Oz mind games begin? हो सकता है. I think Josh Hitchwood has made some bold comments. ठीक है, you expect the Aussies, given all their experience. No team has made 8 finals. No team has won 5 finals. Let them speak. I am genuinely not concerned about Australia tomorrow. Ashwin in place of Siraj, three spinner for Australia is good. No, I would not play Ashwin. Ashwin played one match. It was 6 weeks ago. Why would you bring him now? I don't think so. Not in Ahmedabad. It's not going to be a turning track. Shreyan's carrying a true leader lights the path by walking it, inspiring others with the courage to follow. Well, Shreyans, I don't know who that quote's attributed to, but it could very well be attributed to Rohit Sharma, couldn't it? Australia are playing on reputation. Their tail starts from seventh batting. They're the weakest World Cup team in last 7 World Cup editions. Should Shami start with the new bowling or continue? I've said it again. With each passing win, and we're now looking at 10 wins in a row, you don't need to change a single thing. Devang is saying we'll miss World Cup Rohit Sharma. This is probably his last ODI World Cup match. It is definitely, and what a time he's given us. जय भाई कल भारत 100 पे 4 लुढ़क जाए और अपना सूर्या भाव आए और तबाही मचा दे और मैन द मैच बने स्काई. Let's hope वो नौबत ना आए, but let's good. It's good to back him. AD is given a super chat. Thank you, AD. Thank you. What's your name, my friend? AD. Thank you for the super chat. You do one of the best cricket podcasts. Dil se, shukriya, AD. I always look forward to your narrations and match summary. Keep up the great work. Well, it's because of comments like that, fans like that. Thank you, AD, for the comment, your support, and your generosity. Thank you, AD. Democrat, I really love your unbiased analysis. Thank you, my friend. I try to be. Should a sixth bowling be an area of concern? It definitely should. लेकिन अब तक problem नहीं रह चुका है, तो I don't think it'll happen.
Australia are not new to big crowds. They played MCG all the time. That's true. But when 130K people shouting at top, they'll understand the hostility is real. I want India to be baddest, mouthiest, meanest, nastiest. That's your view. I wouldn't want them to be mean or nasty. There's no point. You are 10-0 for a reason. You've played exceptional cricket. You played the best cricket by a mile. Why do you need to add aggression and being nasty? It's okay. I was at Eden Gardens, and I'll tell you, अगर वहां पे house full था, so 98% of people were supporting South Africa. There was a bit of not hostility, but Australians were getting a lot of stick. They could tell, like when Coetzee bowled Josh English, the entire Eden Gardens was supporting South Africa. So they're used to it. So I think again, Australia are Australia for a reason. They won 5 World Cups. If they let the crowd get to them, they wouldn't be that successful. So I'm saying they're too good. They're going to lose tomorrow. They're going to probably have 50 to 100 supporters tomorrow in yellow. India have chosen Ahmedabad for a reason. Ahmedabad Stadium was refurbished, renovated because they wanted to match the MCG's dominance as a fortress, and now it's gone beyond the MCG. So Australia don't have a chance tomorrow because of the crowd support, because of how good India are. But like I said, I don't want them to be mean. Let your skills speak. Why do you want to suddenly change track and get all nasty? You've not been nasty in 10 matches. Let your talent win. That's what really counts. 2 words for Ricky Ponting. Who cares? That's my 2 words. What should India choose after winning toss? सोनू कुमार, ये थोड़ा मुझे मजाकिया सवाल लगता है, क्योंकि 1987 में सेमीफाइनल में इंडिया ने फील्डिंग लिया और हारे। 1996 में सेमीफाइनल इंडिया ने टॉस जीता, फील्डिंग लिया, हारे। 2003 फाइनल में हारे। वर्ल्ड कप नॉकआउट्स में आप बैटिंग करते हो। ये वर्ल्ड कप बैट फर्स्ट वर्ल्ड कप है। किसी भी कप्तान ने सेमीफाइनल्स में फील्डिंग नहीं लिया। कल क्यों ले? क्यों ले? अगर खुदा ना खास्ता वो खराब दिन कल आ गया सोनू, क्यों चेस करे? मान लो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पहले आई, हमारे बॉलर नहीं चले एक दिन, पॉसिबल है, और ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन पेल दिया, चेस तो नहीं होगा ना। तो ये ऐसे सवाल मत पूछो भाई, ये बैट फर्स्ट वर्ल्ड कप है। What kind of pitch is expected? Somewhat slower, I'm hearing. Not the pitch on which England played, not the pitch on which England played New Zealand, and not the pitch on which Pakistan played India. It's going to be a different one. Thoda slow hoga. Nomad Tibet, thank you. Welcome back, my friend. Been a while, and thank you for your $9.99 super chat. Your question is, good morning. What happened last time live stream? I was listening while I was driving, but you went offline. I'm not sure ye kab ki baat hai, but my prediction is almost accurate, and that is my prediction. But we want Team India to win. Team India will win. I said it back in January, and I've said it numerous times throughout the year. Despite the times when I was being critical, when I was being harsh on this team, I said the best 2 teams of this World Cup who will play the final will be India and Australia. You can go back and check the numerous live streams. I've got many things wrong, I've got many things right, but my conviction, my belief कि final India Australia के बीच में होगा, ये 15 महीने में एक बार भी नहीं पलटा. Since Narendra Modi Stadium was inaugurated in 2021 and limited matches have been played there, we do not know much about the tracks. No, we know there's been a test match there. There's been a few one-dayers. There's been a hell lot of IPL matches. It's a batting track. Win the toss, bat first. You can put up 330 there. Gill to score his first 100 of this World Cup tomorrow. Yes, Siddharth. He knows the Wankhede Stadium. If there's the Narendra Modi Stadium, if there's one ground where Shubman Gill will finally get 100, it will be Ahmedabad. प्रशांत, और अगर इंडिया और ओपनर्स को जल्दी आउट कर देते हैं तो फिर हम जीत सकते हैं। अगर इंडिया, हाँ, ओपनर्स करो। मैंने एक और स्ट्रीम में कहा था आज सुबह, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन की बैटिंग आ जाए, क्योंकि जितना समय वो खेलेंगे, टुक टुक करेंगे, रन रेट कभी बाहर नहीं निकलेगा और फिर ग्लेन मैक्सवेल पे बहुत दबाव पड़ेगा। जी भाई, द रियल क्वेश्चन हियर इज, मुंबई पुलिस अभी भी आप पे गुस्सा है? अरे गुस्सा तो मैं उन पे चढ़ा। I had to go back and I had to remove that clip because I was about to abuse that guy. He was shocked to hear me. He came 3 times. मैंने कहा सर मैं live पे हूँ. And just before that, I was doing a live for a news channel, and the producer kept saying, "Sir, आप मत हिलिए." So when basically it was just I should have kept calm. It was my anger. He came to me 3 times during the other news channel live show, and then he came to me twice and when he came with that lathi and whistle, I lost it. I said, भैया मैंने कोई कानून तोड़ा है क्या? He thought I was one of the fans because I had all these fans. There were fans on the show. There were fans watching. People had recognized me. People wanted to come say hi. So about 9, 10 people had gathered around. He thought I was just, I'm just some fan taking a video. I said, भैया मैं media से हूँ, मैं अपना job कर रहा हूँ. Then he got it. But by that time, after hearing my galis, he ran off. So good spot, Devang, and good question. विनोद काका बहुत दिन बाद जुड़े हैं। जय पाजी, मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ बहुत समय के बाद।
जी बाजी, ये पाकिस्तान इंडियन टीम से इतना जेलस क्यों है? अरे छोड़ो उनको, क्या ये टीम फाइनल्स में है? उस टीम को हमने लात मार के भगा दिया यहाँ से, छोड़ो उनको यार, आगे बढ़ो। डोंट वेस्ट टाइम टॉकिंग अबाउट फालतू टीम्स लाइक पाकिस्तान। ऋषभ वालिया, गुड इवनिंग भाई, आपको भी गुड इवनिंग। एनी स्पेशल थिंग जो इंडिया को ध्यान रखनी चाहिए विच कुड कॉस्ट नॉट इफ दे डू नॉट टेक केयर ऑफ मिचेल स्टार्क एंड जॉश हेजलवुड? आप इन दोनों बॉलर्स को कल आराम से खेलना। मैं नहीं चाहता कि ये टीम कुछ अलग करे, कुछ चेंज करे, कुछ बदलाव लाए, कुछ सेफ्टी करे। आपने मिचेल स्टार्क को पहले भी पीटा है, आपने इस वर्ल्ड कप में सारे बॉलर्स को पीटा है लगभग। आप उसी अंदाज में खेलिए जो अब तक आप खेलते आए हो। अगर आपका दिन नहीं रहा, अगर स्टार्क का दिन रहा, not Cummins. I think Stark and Hazelwood are the biggest threats, not Zampa. अगर बाय चांस अर्ली विकेट गिरे, आपके पास एंकर है, विराट कोहली कल बेहतरीन पारी खेलेंगे। इफ खुदा ना खास्ता एक ओपनर जल्दी आउट हो जाए, तब मैं चाहूंगा कि दूसरा ओपनर जो क्रीज पे टिका है, वो थोड़ा रुक के खेले। यू डोंट नीड बोथ ओपनर्स गोइंग हैमर एंड टॉन्ग्स। बाकी दिस इंडियन टीम हैज नो वीकनेस, इट इज टिक एवरी सिंगल बॉक्स। बस टॉस जीत जाए और बैटिंग करे। थोड़ा मैंने एसी लगा दिया। Sushant is back. Jamie, as we're there in Wankhede semi-final, did you see India being nervous on field during bowling? No, they were not. Things were getting tense, things were getting tough, but they were not nervous. Manish Solanki, we still feel the pain Ponting inflicted in 2003 final. It's payback time. Yeah, but if Ponting is that was 20 years ago. So let's not talk about payback, revenge. कोई बात नहीं. अगर Ponting होते मैं बोलता हाँ ले लो. उस टीम में से एक प्लेयर ना यहाँ है ना वहां है. आगे बढ़ो. ये बहुत ही कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव इंडियन टीम है. Nomad Tibet is back. Another super chat. Thank you, my friend. Scary part is Aussie. They don't panic. Been there, done that multiple times. India should not lose wickets in 15 overs. Wicket नहीं फेंकना. बिल्कुल सही कह रहे हो. I think if you want एक area जहां पे मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एडवांटेज है, वो है कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट्स में ज्यादा आ चुकी है एज कम्पेयर टू इंडिया। कुछ ही महीने पहले, 4-5 महीने पहले, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दे मेट इन द WTC फाइनल। Australia bossed India. They smashed India. They've won that. 2021 T20 World Cup final. It was India's home World Cup because it was shifted from India to the UAE. India didn't get past the first round. They lost to Pakistan by 10 wickets and then they lost to New Zealand. उस टूर्नामेंट को कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। जब खुद ऑस्ट्रेलियन फैंस, ऑस्ट्रेलियन पंडित्स, ऑस्ट्रेलियन एनालिस्ट, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उस वर्ल्ड कप में चांस नहीं दिया और वो जाके जीत चुके हैं। They've won 2 trophies which India have not won now for 10 years. So I think that experience, more than current form, more than man-to-man marking, more than confidence tactics, it's Australia when they get to finals because they've got to so many more finals than India. They have an advantage. India final पहुंच ही नहीं इतने साल से, तो हो सके वो बोले यार अरे अब करना क्या है? That's why I said earlier to a question, India कुछ मत बदलना. Just see this as another match और ये वर्ल्ड कप आपका है. Big ground, singles and doubles will be key factor. Of course, any ground. Ashutosh, Rahul Rawat said same pitches India versus Pak. I've heard something else, but I'm not sure. This is one of my friends told me this. Pak had its back broken and made under par score. So what would have been the ideal score on that track better? On that track, they were on course for 330, but that spell from Siraj and Bumrah, they went what? They went from one 150. I think they lost 8 wickets for 30 runs. They should have scored 330. So again, Pakistan are a terrible side. उनको ज्यादा बात मत देना भाई, छोड़ो उनको. Siddharth Gupta, should Bumrah come around the wicket early to head and Warner? Again, don't try something different. What's working for you? If you feel it's not working, then do it. But I wouldn't have such any pre-planned options. Australia being asked, I expect their least forming player to pay his best in the tournament tomorrow. Tomorrow, I'm worried about Mitchell Marsh. He's got 100, he's got a couple of ducks. He's very dangerous. Dr. Parichय Soni जोड़े हमारे साथ बहुत दिनों बाद. Only way for Aussie to defeat India is Ricky Ponting का spring वाला bat. याद है मुझे वो. I think right now we need World Cup 11 versus India. Well, let's win the World Cup tomorrow. Sompal Singh, Siraj looked a little offbeat. Siraj looked offbeat throughout the tournament, but despite that, he's done well. But I think Kuldeep Yadav and Siraj were probably due one really bad day. Kuldeep hasn't had that really bad day. Siraj had that really bad day in the last match, but that's okay. I think he's going to come back very, very strong. He likes finals. He likes knockout situations. Look at Siraj in Australia in that test series. Every match was a knockout. After 36 all out, look at what Siraj did in those 3 test matches. He made his debut, and by the his second test match, he had to lead India's bowling attack. Look at what he did in the Asia Cup final. Siraj likes the challenge. I think he's going to take 3 wickets tomorrow.
ऑस के पास सिर्फ 4 प्रॉपर बॉलर है, इसका एडवांटेज इंडिया को मिलेगा अगर वो जैम्पा को ठोके, अगर मैक्सवेल को ठोके तो जरूर, अगर नहीं ठोक पाए तो फिर कमजोरी है। जी भैया, आपका क्या प्रेडिक्शन है? कल क्लोज मैच हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया अगर फाइट देगी तो मैच बिल्कुल क्लोज रहेगा। जी भाई, अश्विन को प्लेइंग 11 में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों होना चाहिए? वो खेले नहीं 6 हफ्ते से। आप कल अहमदाबाद जा रहे हो? नहीं, मेरी वाइफ मैं अभी गई यहां से, वो 4 बजे यहां से निकली। वी हैड टू चूज, क्योंकि हम दोनों एक ही कंपनी से जुड़े हैं, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। द कंपनी कैन ओनली सेंड वन पर्सन। आई हैड गॉन फॉर द नॉकआउट्स, वी बोथ वांट टू गो बट वी हैव अ सन हियर, सो आई सेड मेहा यू गो, आई विल नॉट गो। सो मैं नहीं जा रहा हूं, मैं कल आपसे यही जुड़ूंगा। मेरा दिल बहुत बहुत बड़ा है। एक मेरे कॉलीग हैं और दोस्त हैं, आदित्य, हम वो मेरे जूनियर थे, मैं उनका एडिटर था। हम दोनों गए थे 2019 वर्ल्ड कप कवर करने। फ्रॉम डे वन वी बोथ फ्लू टुगेदर। माय बॉस, माय एडिटर सेड आप में से एक को वापस आना पड़ेगा। ही थॉट आई वुड से तुम कि मैं आऊंगा, मैंने कहा नहीं, आई वांट आदित्य। दिस इज आदित्य's second world cup. He done the 2016 world cup with me, but it was his first overseas tour. I really wanted Aditya to enjoy and have the memory of doing the semifinals. So Aditya did the semifinals, he did the final, and he always says thank you Jamie for giving that chance to me. इस बार भी मैंने कहा I could have forced something, I could have paid more money to go. Flights were expensive. I could have dropped my son at someone's house. I said, you know what? Let's know. Let's put family first. I'll be with my son. Meha's been in the studio for 47 matches. She's not got a chance to go to any match beyond 2 matches at the Kotla. I think she's never been to a World Cup final as a journalist. So I wanted her to get that chance. So she's going. So she's just left and she'll be there tomorrow for her channel. So मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, दिल चाहता है कि मैं भी जाऊं अहमदाबाद स्टेडियम, 1,20,000 लोगों के साथ रहूं, इंडिया की जीत देखूं। बट कोई बात नहीं, समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट यू। agree with you. Play Hazelwood and start cautiously. Hammer the spinners. What do you think should win the MO match tournament? For me, it's going to be either Shami or Rohit Sharma. Shami, I mean, yeah, Shami probably. But if you want a batsman, like I said at the start of the stream, I want Rohit Sharma. What's your perdition? I don't know what you mean by perdition. स्टेडियम के बगल में हनुमान जी का मंदिर है, टीम इंडिया को जरूर दर्शन कर लेना चाहिए। बिल्कुल, करिए करिए। एडी सुपर चैट, थैंक यू। क्या सेमी में Jasprit ka line kharab tha. He did. I think he was trying to pitch the ball too far wide up, but I think he'll be back tomorrow. No issue. India has such a good bowling attack that Siraj is our least dangerous bowler. Sorry if I'm saying that with someone. No, he is. He is. Siraj is your weakest link, but he's still doing decently well that you don't need to play somebody else. कुछ changes नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कुछ मिनट पहले, क्योंकि मोहम्मद सिराज फाइनल्स में बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है कल वो 3 विकेट लेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है। घर में अकेले होने का मजा उठा जे भाई। हाँ हाँ, कल मेरा जो सबसे पुराना दोस्त है रॉनजॉय राव, मैं उसको 86 से जानता हूं, कल वो आ रहा है मेरे साथ, हम दोनों पार्टी करेंगे। और होपफुली कल एक और दोस्त भी आएगा। बट अगेन, फॉर मी, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, मेरे लिए फाइनल जब इंडिया होता है, मेरे लिए छुट्टी नहीं होता। कल मुझे 6 लाइव शोज करने पड़ेंगे और 2 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, तो थोड़ा खाना पीना थोड़ा कम होगा। हम परसों पार्टी करेंगे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। Jamie, I'm missing your podcast style discussion with the folks. Uh, which folks? You're talking about my lockdown podcast from 2020 with the actors. I think that's not going to happen because, sorry, if that's the podcast you were talking about, are you talking about the cricket one that I started last year, or the one with the Bollywood people? Just let me know which one. Kuldeep is the key factor. Kuldeep, I think Kuldeep's due a big match also. Kuldeep will take 2 wickets tomorrow. I meant to ask, what's the plan if we're made to bowl first in heat? Again, don't change things. You've done so well. If head starts to hit you, bring the length in. If they both start to hit you, bring in Shami. I think Shami knows this ground very, very well. He's won an IPL here. I think don't make plans. Just, it's not the first time you'll be fielding in the heat. You've done a superb job. I think 4 times before this you bowled in the heat. Don't do anything. Just do what you're doing. Sir, toss agar all जीता and batting first करे, then I think India shouldn't be worried in that case. Toss में हाथ नहीं है। हाँ नहीं, India is not going to worry about anything. Got flashbacks of CT17 and World Cup 16 when Jadeja bowled a no ball in semis. Praying for no more of that. I get it. There is concern, but नहीं होगा. But yeah, I think Hitman is going to hammer and Stark tomorrow. I would not be surprised. I think he should. Ashwin in place of Siraj, no, because that only gives you 2 pacers. You don't need 3 spinners. Not at all. Not at all. Chennai में yes, not Ahmedabad. इंडिया पाकिस्तान का ज्यादा प्रेशर होता है या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का? इंडिया ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान मजाक टीम है यार, उनको छोड़ो। इंडिया 8 बार इस टीम को हरा चुकी है
ऑस्ट्रेलिया को कितनी बार ये टीम हरा चुकी है नॉकआउट्स में? 2011, दैट्स इट। ऑल्सो अहमदाबाद मतलब ओल्ड मोटेरा स्टेडियम। नहीं, प्रेशर नॉकआउट मैच ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ना हल्की में लेती चीज को। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। चलिए, हाउ मेनी मोर क्वेश्चन माय फ्रेंड? इन 7 knockout मैचेस इंडिया लीडिंग 4-3 इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। ऑस्ट्रेलिया, बताओ यार, सोनू ये कौन सा है? मुझे 11 याद है। 2003 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारी। हाउ इज इंडिया लीडिंग ऑस्ट्रेलिया 4-3? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही बार तो खेले नॉकआउट मैच में। 2 बार। 2003 87 में नहीं मिले, 92 में नहीं मिले, 96 में नहीं मिले, 99 में नहीं, इंडिया गई नहीं सेमीफाइनल्स। 2003 का फाइनल, 2007 में इंडिया पहुंच नहीं दूसरी राउंड। भाई सोनू, 2 ही बार तो मिले ये टीम्स नॉकआउट्स में। आपका क्या है कि इंडिया इज लीडिंग ऑस्ट्रेलिया 4-3? डजंट मेक सेंस। Kuldeep's last match, last 2 overs exceptional, especially after Siraj being a bit off. No, I thought those 2 overs for 6 runs, brilliant from Kuldeep. अगर यही टीम विद सेम फॉर्म होती तो क्या 2019 का वर्ल्ड कप जीत सकते थे? बिल्कुल। कंडीशन डिफरेंट, पर आई थिंक वो जो जो टॉस हारे थे सेमीफाइनल में, मैच वहीं गया। जी भाई, इस वर्ल्ड कप के बाद रोहित, अश्विन और जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं, क्या उनको अभी संन्यास की घोषणा करना चाहिए? अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये ज्यादा नहीं खेलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप आप खेलते हो अगले वर्ल्ड कप के लिए। रोहित शर्मा ऐसा है नहीं कि 2 साल वनडे के लिए बोले मैं जा रहा हूं। आई थिंक ही रिटायर, बट अभी छोड़ो, बहुत दूर की बात है। अभी कल एंजॉय करना रोहित शर्मा को। 2007 T20 वर्ल्ड कप was a semi-final. Okay, that's 3, but I don't know how Sonu's got to 7 knockout matches between India and Australia. I'm not sure. टॉस विन फैक्टर होगा कल? बिल्कुल, टॉस इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट। जय भाई, हु वुड बी योर ड्रीम 11 कैप्टन? टुमारो विराट कोहली एंड वाइस कैप्टन मोहम्मद शमी। आई थिंक सोनू इज काउंटिंग ऑल फॉर्मेट्स। यू मीन, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। पैट कमिंस बोले क्राउड चुप करा देंगे, बोलने दो। बिल्कुल यार, ऑस्ट्रेलिया कैन टॉक यार, दे बीट इंडिया। ऑस्ट्रेलिया का हक है बोलना। इसी साल 4 महीने पहले पैट कमिंस की टीम ने इंडिया को धोया WTC फाइनल में। 2 साल पहले ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया क्या जीती लास्ट? 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। इन लोग का पूरा हक है बोलना, बोलने दो। लेकिन हम सब जानते हैं कि जीतेगा कौन। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट पॉडकास्ट, यू डिड इट ऑन इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच विद। Acha, that one. Ha, again, that was more locked down. No, the podcasts were not me. I had 2 podcasts. I still do a podcast, but now because it's only 15 minutes, for about 18 months, I was doing a podcast for the Glance app. That I got cricketers, fans, former players, former selectors, but that was an 18-month contract. Since that ran out, once in a while, I think twice I've called my wife, but the actual podcast that stopped about a year ago. But thank you for your comment. Thank you. Sir, Travis had always performed against India. How can India plan against him? इस वर्ल्ड कप से पहले टॉम लेथम always performed. टॉम लेथम ने तो किसी का कुछ नहीं उखाड़ा. Just bowl full. He'll nick off. Tomorrow, March Magic. Yeah, I think it's possible, Virender. Sir, ICC accredited journalists get all the VIP access, including food and all. Not VIP access, but we get a seat in the press box. आपका नाम और नंबर उस पे होता है. आपको एक सीट मिलता है. आपको फ्री चाय और नाश्ता मिलता है. उसके आगे कुछ नहीं मिलता। वीआईपी तो हम कहीं से नहीं है। आई डोंट थिंक, आप अगर हम होते वीआईपी तो उस दिन वो मुंबई वाला मुझे मारने नहीं आता वांकड़े पे। आई डोंट थिंक रोहित मोस्ट वैल्यूएबल बैट्समैन है। अगर मोस्ट वैल्यूएबल है कोई तो श्रेयस अय्यर है। बहुत बड़ा योगदान, पर श्रेयस अय्यर के 4-5 मैच खराब थे। पिछले 4 मैच में वो चले हैं, पर अगेन दैट्स योर व्यू। आई जस्ट थिंक रोहित शर्मा जो अब तक अपने अहम अंतरराष्ट्रीय करियर में पावर प्ले के अंदर कभी ज्यादा कर नहीं पाए, इससे पहले जो उन्होंने 10 में से 8 मैच में किया, जो चेंज, जो बदलाव वो लाए हैं, मेरे हिसाब से उसी के दम पे इंडिया बहुत अच्छे रन्स बना सकी है, बहुत अच्छे टारगेट चेस कर चुकी है। और जो विराट, अय्यर और केएल राहुल 3 बैट्समैन पे जो प्रेशर कम किया है रोहित ने, इसलिए मेरे हिसाब से एट द एज ऑफ 35, you're not playing another World Cup, to change your game, which has got you. रोहित का पिछला अप्रोच जो था, जिसने उन्हें 3 डबल सेंचुरी बनाया, वो बहुत ही अलग टेम्पलेट था। इस उम्र में, इस समय पर एक वर्ल्ड कप में कहना कि नहीं, मैं कुछ हटके करूंगा, इसलिए मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का रन्स is more important than Virat Kohli and Iyer. That's just my opinion, because he's putting team first, and that's very, very important. Can other countries do to get Australia's mental? What another? A better domestic structure, a better sporting culture,
a better fitness, better mental application, these things. सर आप दिग्निश में इंग्लिश मैन लगती हो, हाँ आप शायद नए आए हो, दिखता हूँ लेकिन हूं नहीं। मैं अमेरिका से हूं, लेकिन मेरी पैदाइश हिंदुस्तान की है। इंडिया कहीं भी खेले विकेट का रोना नहीं, बिल्कुल। इंडिया स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऐसी फलाना चीज को लेकर कभी कंप्लेन नहीं करती, और इंडिया कंडीशन को लेकर कंप्लेन नहीं करती। ये करते हैं ऑजीज और ब्रिट्स। अगर 40 ओवर, एक सेकेंड, सो इन 1998 चैंपियन ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल। अच्छा, आप कह रहे हो इंडिया ओवरऑल। सोनू, आप 1987 वर्ल्ड कप को भूल गए, आप 1983 वर्ल्ड कप को भूल गए, आप 1996 वर्ल्ड कप को भूल गए। ये जो आप कह रहे हो, ये आप सिर्फ क्या 98 से आगे आपने ये क्रिकेट देखना शुरू किया था? क्योंकि आपके स्टैट्स मुझे को समझ में नहीं आया। आपने केवल 7 ऑप्शन दिए हैं। आप 2007 का T20, 2007 का आप T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भूल रहे हो, फाइनल भूल रहे हो। 2014 आपके स्टैट्स बहुत खराब है, माफी चाहूंगा, लेकिन आपको शायद, चलिए छोड़िए, दिस इज नॉट, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपके ये, आपका जो आर्गुमेंट है वो गलत है, सॉरी। मंजीत खान मस्ती, अगर 40 ओवर के बाद 3 आउट होते हैं तो राहुल को आना चाहिए या सूर्या? सूर्या को 6 पे रखो, ऐसी नहीं। सूर्या 6, राहुल 5। श्रेयस अय्यर के इस बंदे के पास 450 रन नंबर 4 पे, आप उन्हें क्यों हटाओगे? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये टीम 10-0 है, और अभी भी लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ चेंज करो। भाई मेरे समझ से बाहर है ये। 2000 semi-final loss. Siraj पिटेगा, that's why अश्विन। नो, 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 अश्विन क्यों खेलेगा? अश्विन आए ही इस वर्ल्ड कप में एक मैच खेलने। अगर आप 6 हफ्ते बाद, 10 मैच के बाद अश्विन को खिलाओगे, फिर तो भैया कल का मैच भूल जाओ, फिर तो हम सब अभी अपने अपने घर चलते हैं। नो नीड। क्या रोहित को नॉर्मल खेलना चाहिए या फिर स्पीड में? अगेन, why are you people asking me questions? Why should Rohit Sharma do something different? He in 10 matches, he out of 10 matches, in 8 matches, he's been India's best batsman. He's putting up 100 runs in 10 overs. Why should he change it? Huh, if the score is 0 for 3, then he changes. But I'm saying the form is in, Maro Starko, Maro Hazelwood ko. And what is, I mean, sorry, I'm being a little harsh here. What is normal खेलना चाहिए भाई? I'm giving him all the credit for India's batting success. The man has changed India's. India was playing outdated approach. India के पास 4 एंकर थे. Someone said, विराट भाई, आप ही एंकर बनना, शुभमन, रोहित, श्रेयस, तुम लोग मारो। ये वनडे क्रिकेट है, आपको वनडे क्रिकेट जीतने के लिए आपको मारना पड़ता है। सो आई डोंट, आई मीन, अगेन, maybe you think I'm being harsh. I don't know why you would want Rohit Sharma to change his way and play normally. It doesn't make any sense. बिकॉज 15 में बैस मकरम का योगदान इतना बड़ा नहीं है जितना रोहित का है भाई। अश्विन को खिलाना चाहिए? नहीं, अश्विन अश्विन क्यों? क्या करना चाहिए? टॉस जीत जीत कर दोनों टीम को। समीर, आपने ये वर्ल्ड कप देखा है? अगर आपने देखा होगा तो आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई? डे वन से लेकर आज तक ये बैट फर्स्ट वर्ल्ड कप है दोस्त। What's the ideal score for team batting first tomorrow? 3:30. Do you think Australia will do something different? I feel apart from last match, their power play bowling was surprisingly bad. Yeah, the three fast bowlers have not been that good in the power play. I don't think. Look, Australia were down and out. On October 15th, they were 10 out of 10, but they've won 8 in a row. So whatever they're doing, they're not going to change it. You start. Okay, let me say this now, and I don't want to be asked questions about what should they do different. It makes no sense. When a team is 10-0, when a team is 8-2, you don't do different things. You have done different things to get back in the World Cup. So just stick to the basics. There's nothing required to do. कल ड्यू का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? अहमदाबाद में तो नहीं होगा ड्यू। व्हाट्स द आइडिया? ऑस्ट्रेलिया टीम, ऑस्ट्रेलिया मीडिया रोएगी कल, बिल्कुल रोएगी। जय भाई, कल स्पिन ट्रैक है, सूर्या बाहर होगा और अश्विन आएगा, फिर तो आपके पास एक बैटिंग कम होगा। ऐसा पाकिस्तान का यूट्यूबर बोल रहा है तो बोले दो। कौन सा यूट्यूबर है भाई ये? इनकी हालत देखो टीम की। क्या कल स्विंग रहेगा? बिल्कुल रहेगा, शामी का होम ग्राउंड है, क्यों नहीं रहेगा? हाय पवन। अभिनव कह रहे हैं लीग मैच में ऑलमोस्ट हार गए थे हम उनसे। पैट नहीं बोला विराट का कैच, अगर नहीं, मैंने खुद कहा था, अगर आई सेड दैट डे, आई सेड मिचेल मार्श, यू हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप। उस दिन मैंने कहा था, October 8 को मैंने इसी शो पे कहा था, मिचेल मार्श ड्रॉप द वर्ल्ड कप दैट डे, बिकॉज उस दिन के बाद इंडिया वो मैच हारती तो इतना मोमेंटम हासिल नहीं कर पाती। इंडिया ओज अ लॉट टू हार्दिक पांड्या's इंजरी and a lot to Mitchell Marsh's drop catch. Since Sky is not performed, do you think this match could be his redemption? I don't believe in words like redemption and revenge, so I know nothing. I'm talking about overall ICC knockout tournament. No, but you're not, na, because you've not counted in 90. Bhai, Sonu,
1983 में एक छोटा टूर्नामेंट हुआ था इंग्लैंड में जिसका नाम था वर्ल्ड कप। उसमें कपिल देव की टीम जीती है। तो अगर आपको ये आर्गुमेंट मुझे देना है तो आपने 83 से शुरू क्यों किया? इंडिया 83 में सेमीफाइनल्स को इंग्लैंड को जीत के आई, फाइनल में वेस्ट इंडीज डबल टाइम चैंपियंस वेस्ट इंडीज को हरा के आई। तो आपने वहां से शुरू क्यों नहीं किया? 87 में इंडिया सेमीफाइनल तक आई थी, इंडिया हारी। 96 में ईडन गार्डन्स के फैंस ने स्टेडियम में आग लगाई थी। तो आपने ये मैच यहां पे काउंट क्यों नहीं किया? मैं आपके लॉजिक पे सवाल उठा रहा हूं, ये जानता हूं मैं, लेकिन आप कह रहे हो ओवरऑल आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट। तो इसमें 83 वर्ल्ड कप क्यों नहीं आ रहा है? इसमें 87 वर्ल्ड कप क्यों नहीं आ रहा है? इसमें 96 वर्ल्ड कप क्यों नहीं आ रहा है? इसमें 2003 वर्ल्ड कप क्यों नहीं आ रहा है? मैं वो पूछ रहा हूं आपसे दोस्त। प्रिंस इज बैक इन हिज den, नॉट scared this ऑस्ट्रेलियन साइड, बिल्कुल नहीं। I think ICC should promote associate nations more. They should, but I discussed it many times. Why? So I'm not going to go there again. Sorry for joining late. What will be the ideal score? कोई बात नहीं, ये सवाल 3 बार पहले आ चुका है और जवाब है 330। Manjrekar said a nice point that both teams have uh, more than 9 players in the regular test teams. Do you think there's more to adapt in the test and the T20? Definitely. I think the fact that so many teams struggle, England, Sri Lanka, Pakistan, it's because they're still stuck in T20 mode. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। If Australia batting first, then what's the score that India के? अब आया ना असली सवाल। Okay, if Australia bat first, India would need to keep them to under 275. There you go. That's a good question. Your thoughts on Ashish Nehra's statement? I have not read it. Please let me know what it is. Navjot Baji, welcome back. कल के लिए नीली jersey ready है ना? Ready है, ready है. No, again you've joined late. I just explained about 15 minutes ago why I didn't go. So it's because Meha, she just left at 4 o'clock. She's gone. From the company side, from a husband, wife, family side, only one person could go. So Meha's gone. Ravi Shankar, I don't know what the Ashish Nehra statement is, but I'm sure you let me know. Sir, FIFA qualifies. Chal rahe. Can India qualify? I might actually be going to Bhubaneswar on the 21st to watch the team play. But again, qualify कर सकती है, but बहुत बहुत मुश्किल होगा यार. Anyways, we have any other questions? I've got to get. Oh my gosh, my next show is at 6. अभी है time. So yeah, again, in short, आप लोग मेरी गलतियां जानते हैं जो मैंने कमियां निकाली टीम इंडिया की, कुछ साहित्य कुछ गलती, लेकिन आपको आपको एक चीज तो मानना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत बहुत बार, अभी कुछ लोग हैं स्ट्रीम पर जो पिछले 3-4 महीने में, पूरा 11 महीने में इंडिया को लेकर घबरा रहे थे। मैंने इस टीम की बुराई करी, मैंने इस टीम की तारीफ करी, लेकिन आपको एक चीज माननी पड़ेगी। पूरे साल मैंने कहा था कि इंडिया एक आंख बंद करके ये वर्ल्ड कप जीत सकती है, और पहुंच गई ना टीम 10-0। Because the standard of one day cricket has not been as good. There's not as many competitive teams left, and I think this World Cup really showed. इस 10 टीम के टूर्नामेंट में 3 अच्छी टीम्स हैं, एक ठीक ठाक टीम, और बाकी 5 टीम्स बहुत बहुत खराब थी। इंडिया का होम एडवांटेज 2015 से इतनी बार कह चुका हूं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक टीम जीती है, वो ऑस्ट्रेलिया। सो ऑल माय प्रिडिक्शंस डिडंट कम आउट राइट। आई हैड शुभमन गिल breaking Sachin's record. It didn't happen. Virat Kohli broke his record. I had Kuldeep Yadav taking 30 wickets. He's not even got to 20 wickets. But my prediction that India and Australia will be in the final, वो साबित हो गया। And my conviction कि इंडिया सबसे डोमिनेट टीम रहेगी होम एडवांटेज को लेकर, ये भी सही साबित हुआ। बस एक चीज बाकी है, मेरा कल का प्रिडिक्शन। उसके लिए आपको कल सुबह दोस्तों इसी वर्ल्ड कप चैनल पे आना पड़ेगा, इसी डिस्कशन से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है? Love you all. I'm going to go. It's been 38 minutes. I've got to get an article ready, a preview written. Love you all. Tomorrow morning, come back and see me at 10 o'clock right on this channel. We'll do a live stream and we'll talk more about India and Australia. Love you all. Have a great Saturday. Jai Hind.